Assalamualaikum students. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Students, my name is Jahangir. Today we will start our third lecture of mathematics class 9. So our first exercise is 1.1. So let's start it. Students, our first question is find the order of the following matrices. स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 8 पार्ट्स हैं तो हम 2 से 3 पार्ट्स कर लेते हैं. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज A 2 3 minus 5 and 6. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेनेशन में, तो मैं एक दफा रिपीट करूंगा. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स. किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होती हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं. इट्स रो 1 एंड इट्स रो 2. नाउ वी विल सी द कॉलम्स. It's C1 and it's C2. So the order of A is 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. Okay students, अब हम पार्ट E देखते हैं. A, B, C, D, E and F. Students, सबसे पहले हम रोज देखेंगे, then columns. This is row 1, this is row 2, this is row 3, and next columns. This is column 1, this is column 2. So the order of matrix E is 3 by 2 because it has 3 rows and 2 columns. Got it students? Students, part B में देखते हैं. इसमें 2 rows हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 2. इसी तरह पार्ट सी का जो ऑर्डर है वो 1 by 2 है because it has 1 row and 2 columns. Next part D, it has 3 rows and 1 column, so the order of D is 3 by 1. E तो हमने इधर कर लिया, ठीक है. F का जो ऑर्डर है वो 1 by 1 है because it has 1 row and 1 column. Next part G. G is a matrix of order 3 by 3 because it has 3 rows and 3 columns. Next H. H is a matrix of order 2 by 3 because it has 2 rows and 3 columns. Got it students? अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Let's erase it. Okay. Our second question is which of the following matrices are equal? Question number second is which of the following
matrices are equal one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. There are the 10 matrices. So first matrix is A 3. Next B is 3 5. Next C 5 minus 2. Next D 5 3. Got it, students? Next E is 4 0 6 2. Next F is 2 6. Next G is 3 minus 1 and 3 plus 3. Okay, students. Next H is 4 0 6 2. Next I is 3 and 3 plus 2. And finally J is 2 plus 2, 2 minus 2, next 2 plus 4 and 2 plus 0. Students, these are the following matrices. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वल मैट्रिसेस को देखा था. There are the two conditions for the equal matrices. Number first is order of the matrices should be the same, and second condition is the corresponding entries must be similar. Okay, students. जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड जो कंडीशन है उसमें corresponding entries इक्वल होनी चाहिए. corresponding means बिल 30. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन सभी मैट्रिसेस में ऑर्डर देखते हैं, ठीक है. देन हम सेकंड कंडीशन देखेंगे. सो A is a matrix of order 1 by 1 because it has one row and one column. We can write the order here. Got it, students? Next, B is a matrix of order 1 by 2 because it has one row and two columns. Next, C is a matrix of order 1 by 1. 1 by 1. Students, आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये मतलब two entries हैं. This is only one entry, okay? Because there is no gap between these two numbers. It's 5 minus 2. 5 minus 2 means 3, okay? अगर ये इस तरह से होता like 5 and minus 2, इस तरह से इनमें गैप होता तो फिर ये 2 entries थी, ठीक है. It's only one entry. 5 minus 2 is only one entry. Okay, students? Next, D. It has only one row and two columns, so its order is 1 by 2. Next, E is a matrix of order 2 by 2 because it has two rows and two columns. Next, F is a matrix of order 2 by 1 because it has two rows and one column. Next, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स में
2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया, इट्स ओनली वन एंट्री एंड इट्स ओनली वन एंट्री। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एज is a matrix of order 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. Next, I is a matrix of order 1 by 2 because it has only 1 row and 2 columns. Again, our final matrix J has the order 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. Okay, students, 2 by 2. Students, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को देखेंगे, इसका ऑर्डर 1 by 1 है। अब हमने वो वाले मैट्रिसेस देखने हैं कि जिनके ऑर्डर्स 1 by 1 हो, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इसका 1 by 2 है, इट्स 1 by 1, ओके। और देख लेते हैं यहाँ जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो, और तो कोई भी नहीं ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों मैट्रिसेस में आपने देखना है कि 2 कंडीशंस जो इक्वल मैट्रिसेस के लिए थी वो इसमें अगर होल्ड कर जाती हैं तो फिर ए और सी जो होगा वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी होल्ड कर रही है इसमें, ऑर्डर इज 1 by 1 एंड ऑर्डर इज 1 by 1। सेकंड कंडीशन में क्या था कि जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। इट्स 3 एंड 5 minus 2 is 3. So corresponding entries are also equal. So we can say A and C are the equal matrices. Okay, students. A is equal to C. Now the matrix B has order 1 by 2. अब 1 by 2 वाले ऑर्डर वाले मैट्रिसेस हम यहाँ से सर्च करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 by 2, नेक्स्ट ये भी 1 by 2 है, और देख लेते हैं जिसका ऑर्डर 1 by 2 हो, ये मैट्रिक्स आई है, और ये इसका 2 by 2 है। तो 3 मैट्रिसेस हमारे पास हैं जिनके ऑर्डर 1 by 2 है। एक B है, एक D है और एक I है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जैसा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट्स ऑर्डर इज 1 by 2, 1 by 2 ऑर्डर एंड 1 by 2 ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है इसमें स्टूडेंट्स। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि इनकी क्या करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग मींस बिल तरतीब, ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स 3, यहाँ 3 है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी इसी पोजीशन पे 3 होना कंपल्सरी है, ठीक है। इट्स 3 एंड इट्स 5. 3 is not equal to 5, that's why matrix B is not equal to matrix D. matrix B और matrix D equal नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम B और I की corresponding entries देखते हैं स्टूडेंट्स। It's 3 and it's 3. Next, it's 5 and 3 plus 2 is equal to 5. Okay. So the corresponding entries of these two matrices are equal. First condition हमारी already hold कर दी थी, ठीक है, और इनकी corresponding entries भी same हो गई हैं students. So we can say matrix B and matrix I are the equal matrices. Okay. So B is equal to I. Next, हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो ये सब में, ठीक है। अब हम E देखते हैं,
ई को ऑर्डर है 2/2। स्टूडेंट्स अब हमने देखने हैं इसमें 2/2 वाले जो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। इट्स 2/2, नेक्स्ट इट्स 2/2 और 2/2 ये भी है, जे भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ई, एच और जे इन तीनों को देखना है क्या इनकी जो corresponding एंट्रीज हैं वो सेम है। corresponding एंट्रीज it's 4 and 2 plus 2 is 4. Okay, next 0 0 and 2 minus 2 is 0. Next 6, it's 6 and finally 2 plus 4 is also 6. Next 2, it's 2 and 2 plus 0 is 2. Okay students, so the corresponding entries of matrix E, H and J are also equal, so we can say the matrices E, H and J are the equal matrices. Okay students, E, H and J और the equal matrices. Okay students, अब हमारे पास जो फाइनल टू मैट्रिक्स रहते हैं वो F और J है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में आप देख सकते हैं ऑर्डर तो सेम है इनका, फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर दिया। सेकंड देखते हैं corresponding entries सेम है, it's 2, 3 minus 1 is 2, same, it's 6, 3 plus 3 is 6, so corresponding entries are also the same, so we can say F and G are the equal matrices. So F is equal to G. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको क्लियर किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो फाइनल में मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इसको लाजमी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।